Welcome class 11. In today's video we will learn about the role of promoters from chapter number 3, formation of a company. In this video we will see which kinds of the role played by the promoters. Okay, so very first, starting the role of promoters, we need to first understand the meaning of promoters. Who are the promoters? So guys, a promoter is a person who take lead to form the company. Promoter is the person who take the lead to form the company. Means he is the person who take the responsibility to form the company, and that person is known as the promoters. According to the Companies Act 2013, promoters is defined under section 269. A promoter is a person who has been named in prospectus or identify the company in annual return. Promoter is a person who has been named in prospectus or identified by the company in annual return, and he is also person who has control on the company's affairs directly or indirectly. ओके, प्रमोटर वो पर्सन है जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, कंपनी की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल होएगा, वेदर ही विल बी शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज ही विल बी एडवाइज़र, डायरेक्शन, मतलब उसकी जो भी एडवाइस होगी, डायरेक्शंस हो गए, इंस्ट्रक्शन हो गए, उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, accustomed होंगे टू एक्ट, मीन्स all the board of director to act as per the accordance of the advice, direction and instruction of the promoters. Okay, so promoter is the person who give advice, direction or instruction to the board of director to perform their activity or act in behalf of the company. Okay, now thereafter we will see the what are the role of promoter. So in your textbook you can see the very first point has given here, promoters are the ones who come up with the idea of starting a business. प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी में उस आइडिया के साथ आता है कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है. सो प्रमोटर इज़ द वेरी फर्स्ट पर्सन हु कम अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. ओके, मीन्स इट कंज्यूम और डिस्कवर द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ बिजनेस. द प्रोमोटर्स का क्या पहला रोल क्या है, टू कंसीव और डिस्कवर द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ बिजनेस. नाउ देयर आफ्टर second role of promoter is that they decide the object of the business, amount of capital needed and scale of business operation. Means second role of the promoter is to decide the object of the business, means business का क्या object होगा, and for achieving that object what amount of capital is required or needed and what are the scale of business, means company का business का scale operation कितना होगा. This all thing will decided by the promoter. Okay, so second role of promoter is that to decide the aim and object of the business, thereafter the amount of capital and thereafter the scale and size of the business. Okay, now third role of promoter is that they prepare the various document which is needed for the incorporation of a company like memorandum, articles, prospectus, etc, etc. So the next role of promoter is that to draft the memorandum of association, articles of association, and besides this the company promoter also has to draft the prospectus, means the promoters has also responsibility to draft the prospectus to invite the investors. Okay, मीन्स इन्वेस्टर जो कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस भी प्रिपेयर करना, ड्राफ्ट करना है, किसकी जिम्मेदारी होगी, प्रमोटर की. ओके, नाउ द फोर्थ रोल ऑफ प्रमोटर इज अप्रोच इन्वेस्टर फॉर कलेक्टिंग कैपिटल फॉर द कंपनी. यस, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, इन्वाइट करना, दिस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ द प्रमोटर. नाउ फिफ्थ role of promoter is that promoter often nominate themselves as first director of the company and first subscriber to memorandum articles of association. Yes, promoter अपने आप को ऐसे नॉमिनेट करेगा कि वो क्या हो सकता है, कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर हो सकता है. ओके, या फिर कंपनी का फर्स्ट सब्सक्राइबर हो सकता है. ओके,
So the promoters often nominate themselves as first directors of the company and first subscriber to memorandum and articles of association. Means he appoint first directors and first subscriber to memorandum of association and articles of association. Now the promoters can enter into the contract with third parties on behalf of the proposed company. अब वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लाइक वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कंपनी को अगर मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है, आर्टिकल्स प्रिपेयर करना है, इस तरह के उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर्स भी एंटर करेगा, ओके, विद द थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज कंपनी। एंड if the company have to hire the office premises, so in that contract also the promoter enters. Means the promoters have to play a role to enter into the preliminary contract, like hiring office premises, preparing and drafting memorandum of association and articles of association, okay. And promoters have fiduciary duties. Fiduciary duties means it is a act which performed by the good faith and trust which is put upon him by another person. मीन्स एक अच्छी फैथ के साथ, एक गुड ट्रस्ट के साथ वो कंपनी में काम करेगा विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, ओके, बिना पर्सनल और सीक्रेट प्रॉफिट के वो कंपनी में वर्क परफॉर्म करेगा. So promoter has a fiduciary duties toward the company they are setting up, and they are supposed to act in such a manner so as to protect and promote the interests of the proposed company, and they cannot make any secret or personal profit while promoting a company. Okay, now they have to disclose any personal interest they have in transaction they have entered on behalf of the proposed company. कंपनी अगर कंपनी के साथ उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी कंपनसेट द प्रमोटर्स बाय रिइंबर्सिंग देम द एक्सपेंस इनकर्ड बाय देम इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी नोन एज द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी क्या करेगी, प्रमोटर्स को कंपनसेट करेगी, ओके. एंड इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. Okay, so promoters play a very important role in the formation of a company. So हम लोग शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं. Promoters first discover the idea of business formation, and promoter decides aims and objective of the business, amounts of capital, scale, size of business. Thereafter, it also draft the memorandum of association and articles of association. It also draft the prospectus to invite investors. It also appoint the first directors and first subscriber of memorandum and articles of association, and it also enter into the preliminary contract like hiring office premises etc. and it protect and promote the interest of the company. जो भी प्रपोज कंपनी है उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रमोट करना उसके इंटरेस्ट को, ओके. सो दस प्रोमोटर्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ओके. सो आज के लिए इतना ही. गुड बाय. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक. टेक केयर.